Good morning to all. Can you hear me? आवाज आ रहा है क्या? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. So in the last period, we have seen reference electrode. So electrode whose potential is arbitrarily fixed or zero or exactly known is called as reference electrode. There are two types of reference electrode. First is standard hydrogen electrode. It is a primary reference electrode. And second is Calomel electrode. It is a secondary reference electrode. So in the last period, we have seen that is in detail about the standard hydrogen electrode. Today we are discussing on Calomel electrode. Second, that is electrode, that is the Calomel electrode. Now Calomel electrode, first principle, what is the principle of Calomel electrode? It is called secondary reference electrode. Calomel electrode is called secondary reference electrode as its potential is determined with respect to standard hydrogen gas electrode. So it is called secondary reference electrode. So it is called secondary reference electrode as its potential is determined with respect to standard hydrogen gas electrode. So this is the principle of Calomel electrode. Now next is diagram and construction. Now see the diagram of Calomel electrode. Now this Calomel electrode consists of a tubular tube. See, this is a tubular tube having, that is a two side tube, having two side tube. So we see the construction of this Calomel electrode. It consists of tubular glass vessel or tubular glass vessel. So this is the tubular glass vessel. See, this tube is called as tubular glass vessel having a bent U tube at the bottom. So this is the tubular glass vessel, and at the bottom of this tubular glass vessel a U tube is attached. इंग्लिश लेटर U की तरह जो है यहाँ पर बॉटम में इस ट्यूबुलर ग्लास वेसल या ट्यूब में जो है अटैच किया गया है. सो दिस इज द U tube, bent U tube, and this is present at the bottom, and a side arm in the middle for insertion in the desired solution. A side arm, देखिए, so this is a side arm. It is also a tube, but it is called as side arm. इसे उर्दू में कहेंगे बगली नली, side arm, for the insertion of, that is the desired solution, and this is at the middle of this tubular glass vessel. So this Calomel electrode consists of tubular glass vessel or tube. This is the tubular glass vessel or tube, and at the bottom of this tubular glass vessel a bent U tube is attached. This is the, it is like English letter U, so it is called U tube, and in the middle there is a side arm for the insertion of, that is the desired solution. At the bottom lies mercury, which is covered with a paste of mercury and mercurous chloride, that is called as calomel.
So see the diagram. So in this tubular glass vessel, at the bottom of this tubular glass vessel, a mercury is placed, Hg mercury. See, this is the mercury, which is C, that is in the diagram here. This is the mercury, which is present, that is at the bottom of this tubular glass vessel, mercury is placed. Now above this, that is mercury, a paste of mercury and mercurous chloride. आपको क्या करना है, मर्क्यूरी लेना है और उसमें फिर मर्क्यूरस क्लोराइड मिलाना है, उसका पेस्ट तैयार करना है और वो पेस्ट यहाँ पे प्लेस करना है. सो दिस पेस्ट ऑफ मर्क्यूरी एंड मर्क्यूरी क्लोराइड इज कॉल्ड एज कैलोमेल. इसे हम क्या कहते हैं, कैलोमेल के, इसलिए उसका नाम जो है कैलोमेल इलेक्ट्रोड दिया गया है. इस मर्क्यूरी और मर्क्यूरस क्लोराइड के पेस्ट को हम क्या कहते हैं, कैलोमेल, CALOMEL, कैलोमेल. Understand? So remember that the paste of mercury and mercury chloride is called as calomel. Understand? Now above this, that is a remaining part of this tubular glass vessel is filled with, that is a 1 normal or 0.1 normal or saturated KCl solution. This is the saturated KCl solution, and at the bottom in mercury, that is platinum wire is fitted here for electrical contact. So this is the platinum wire. So a platinum wire is sealed in the mercury, यानी platinum wire mercury में fit किया गया है through the bent tube, यानी U tube में के through उसे बाहर लिया गया है. The remaining portion of the vessel is filled with KCl solution, either of 1 normal or 0.1 normal or saturated. Remember the concentration of this KCl solution. देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कौन सा सॉल्यूशन इस्तेमाल किए थे हमने, यहाँ पर बता सकते, कल जब देखे थे हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में which solution is used, which solution is used in standard hydrogen electrode. H plus concentration लिए थे हमने, तो कौन सा solution था H plus का, HCl. Understand? So HCl solution is used, but in calomel electrode, remember that KCl solution, potassium chloride solution is taken, and its concentration देखिए, इसका concentration कितना है, 1 normal, 0.1 normal or saturated solution. The side tube is closed by a glass wool plug. So this is the side tube, and it is closed by, that is the wool plug, glass wool plug. उसे जो है हमने सील किया है, बंद किया है, क्लोज किया है, इससे ग्लास wool plug से, and deep in solution of other electrode, और उसे हमने क्या किया है, other electrode के solution में deep किया है. So this is the construction, that is it consists of tubular glass vessel having a bent U tube at the bottom and a side arm in the middle for insertion in the desired solution. So that is shown in diagram. It consists of a tubular glass vessel having, that is one U tube, bent U tube at the bottom, and other side arm which is present in the middle. Then at the bottom of this tubular glass vessel, mercury is placed, and above this, that is a paste of mercury and mercury chloride is there. Now mercury is fitted or fit in the bent U tube, and remaining part of the glass tube is filled with saturated or 1 normal or 0.1 normal KCl solution. So this is the construction of this calomel electrode. Now next is representation. How this calomel electrode is represented. How this calomel electrode is
रिप्रेजेंटेड। now देखिए सबसे पहले क्या है यहाँ पर, देखिए डायग्राम में क्या है, सबसे पहले देखिए दिस, व्हाट इज दिस, Hg, mercury, it is in the form of liquid. So here mercury is there, so Hg liquid, mercury liquid, mercury के कांटेक्ट में सिंगल वर्टिकल line, so in contact with mercury, which solution is there? See, in contact with mercury, this is there, that is a paste of mercuric and mercury chloride. So we have written that is in contact with mercurous chloride and this is the solid. अब उसके कांटेक्ट में कौन है देखिए, फर्स्ट mercury is there, mercury is in contact with mercurous chloride and mercurous chloride is in contact with this KCl solution. We have to write the ions, that is the Cl minus. So this is the representation of this calomel electrode. जिस तरह से आपने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन लिखा था, उसी तरह that is this is the representation of, that is calomel electrode. Mercury liquid which is in contact with mercurous chloride Hg2Cl2 which is solid, and which is in contact with, that is the Cl minus. Now next is working. Now the calomel electrode can act as anode or cathode depending on the nature of other electrode of the cell. So this calomel electrode can act as cathode or anode depending upon the nature of electrode of the cell. उस electrode का nature क्या है उस पे, that is depend है whether the calomel electrode act as anode or calomel electrode act as, that is the cathode. Now first, when it act as anode, the electrode reaction is, when it act as anode, the electrode reaction is, so first of all mercury, that is if we consider here, that is calomel electrode act as anode, then what will happen, we have to take mercury, mercury is there and it is in the form of liquid, so mercury loses the electron and converted into mercury, Hg2+. So and 2 electrons are here lost, a process in which electrons are lost, so it is called as the oxidation. So 2Hg liquid, it is converted into, that is Hg2+ plus 2 electron. Now these are 2 Hg2+, they react with, that is Cl minus ion in the solution and it form mercuric chloride Hg2Cl2. So first is mercury liquid, it is converted into twice Hg2+ plus 2 electron. Now these mercuric ion, they react with chloride ion present in the solution and it is converted into mercuric chloride, and overall reaction is twice Hg, this twice Hg plus twice Cl minus plus 2Cl minus, it is converted into mercuric chloride Hg2Cl2 plus 2 electron. As electrons are lost in this reaction, that is, it is a process of oxidation. So when, that is, it act as anode, the electrode reaction is this, and overall reaction is 2 mercury plus 2 Cl minus, it form mercury chloride plus 2 electron. In this reaction, electrons are lost, so it is process of, that is the oxidation. Now when it act as cathode, when it act, that is when calomel electrode act as cathode, the electrode reaction is, now this mercuric ion, they accept the electron. Here mercury liquid, it loses the electron and converted into mercuric ion. These mercuric ion Hg2+, they gain the electron, they accept the electron and converted into, that is twice Hg. Now this mercuric chloride, it
then it is then converted into mercuric ion and chloride ion. Now the overall reaction is mercuric chloride, they gain the electron, they accept the electron and convert into, that is mercury liquid and chloride ion. As in this reaction, electrons are accepted, so it is a process of, that is the reduction. So this is the working. Now next is advantages. Advantages of Calomel electrode. Advantages of Calomel electrode. Now first advantage is that it is easy to construct and transport and convenient to handle. So it is the first advantage of this Calomel electrode. It is easy to construct. Zyada difficult nahi hai. One glass tube is there, then in the middle side arm is there for insertion of the desired solution. Then at the bottom U-shaped tube is there, and first in this, at the lower of this tube, the lower end of the tubular glass vessel filled with mercury, then above mercury a paste of mercury chloride, mercury and mercury chloride is there, that is called as calomel, and remaining part of this glass tube is filled with KCl solution. That the concentration may be saturated 1 normal or 0.1 normal. Next, its potential is highly reproducible and remains constant. So second advantage is that its potential is highly reproducible and remains constant. And third one, no separate salt bridge. Salt bridge इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है. No separate salt bridge is required for its combination with other electrode. So this is regarding the Calomel electrode. वैसे generally एक ही electrode है हमारे syllabus में. Calomel electrode पे generally question नहीं आया है. Standard hydrogen electrode पर ही question आया है reference electrode में. But we have taken, because already we have studied in 12th standard Calomel electrode, so I have taken Calomel electrode also. Okay, so this is regarding the Calomel electrode. Now next part is, that is a conventional representation. Conventional representation of a cell. कोई इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कैसा करेंगे? अभी आपने लिखा था मर्क्यूरी in contact with single vertical line, then mercury chloride. Mercury chloride किसके contact में है? That is the Cl minus के. So rules are there, and by using these rules we have to write the conventional representation of a cell. आपको एक cell reaction दी गई है, उस पर से उसका representation आपको लिखना है. So certain rules are there, and by using these rules we represent the given cell. So what are the rules? Already we have discussed that rule. First, the anode or the negative electrode. Remember that anode क्या होता है? Negative or a negative electrode at which oxidation takes place. Negative electrode or oxidation. The anode or the negative electrode at which oxidation takes place is written as, आवाज सुनाई दे रहा है क्या? Can you hear me? Yes. आवाज सुनाई दे रहा है? Okay. So the anode or the negative electrode, the anode or the negative electrode
at which oxidation takes place is written on the left hand side. Okay, so जो negative electrode है, negative electrode is written on, that is a लेफ्ट हैंड साइड. तो आपको सबसे पहले इसमें जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है. विच इलेक्ट्रोड इज देयर, द नेगेटिव इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. नेगेटिव इलेक्ट्रोड को आपको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है. That is the first rule. The anode or the negative electrode at which oxidation takes place is written ऐसा आवाज आ रहा है क्या? Yes, sir. मैसेज आया था कि अभी आवाज क्लियर नहीं आ रहा है. अभी आ रहा है ना? ओके, सो अभी आ रहा है सर. ओके, so I will repeat again. Conventional representation of a cell. So how the cell is represented? So rules are there, and by using these rules we have to write the cell. So first rule is that the anode or the negative electrode at which oxidation takes place is written on the left hand side. यानी एनोड और द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, उसको हमें कहाँ लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड. नेक्स्ट नंबर 2, द कैथोड उसका अपोजिट रहेगा, यानी कैथोड जो इलेक्ट्रोड रहेगा उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे. नहीं, एनोड को. और कैथोड कहाँ लिखेंगे, देखिए, द कैथोड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस इज रिटन on the right hand side. The cathode or the positive electrode, जो कैथोड है उसे हम कहाँ लिखेंगे, राइट हैंड साइड में. सो दिस इज द सेकेंड रूल, वेरी सिंपल. जो एनोड है, जो इलेक्ट्रोड है, उसमें जो एनोड होगा उसको कहाँ पर लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे. और जो कैथोड है, दैट इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, इज रिटन ऑन राइट हैंड साइड. तो ये दो रूल है. नेगेटिव इलेक्ट्रोड दैट इज एनोड, उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन होता है इज रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड. एंड द अदर इलेक्ट्रोड दैट इज द कैथोड, दैट इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस इज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड. नाउ थर्ड रूल, a vertical line, single vertical line or semicolon, इस तरह semicolon indicate a contact between the two phases. Contact between the two. यानी सिंगल वर्टिकल लाइन क्या डिनोट करती है, कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू फेजेस. फॉर एग्जांपल जिंक है, हमने जिंक को किस में डीप किया है, जिंक सल्फेट में. तो कैसा डिनोट करेंगे हम उसे, जिंक सिंगल वर्टिकल लाइन एंड ZnSO4, या उसके आयन भी लिख सकते हैं आप, Zn+2. अंडरस्टैंड, इससे पहले देखा है हमने. दैट इज हाउ द सेल इज रिप्रेजेंटेड. तो ए वर्टिकल लाइन, single vertical line or semicolon indicate a contact between two phases. A contact between two phases. Understand? Now the anode of the cell is represented by writing metal first and then the metal ion present in the electrolytic solution. अब देखिए, the anode of the cell, हम anode को कहाँ पे लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हैं. That is the negative electrode at which oxidation takes place. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, उसमें मेटल लिखेंगे. मेटल जैसा कि बताया मैंने, जिंक Zn लिखेंगे पहले. Zn उसके आयन पहले नहीं लिखेंगे. वी हैव टू राइट मेटल फर्स्ट एंड देन मेटल आयन, और उसके जो आयन है वो मेटल आयन लिखेंगे. जैसा कि फॉर एग्जांपल जिंक है, जिंक रॉड है, जिंक रॉड को हमने डीप किया है कॉपर सल्फेट में, सॉरी जिंक सल्फेट में डीप किया है. तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे उसे, हम पहले लिखेंगे जिंक, लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे जिंक Zn, और सिंगल वर्टिकल लाइन, क्योंकि सिंगल वर्टिकल लाइन क्या डिनोट करता है, दैट इज ए सिंगल वर्टिकल लाइन इंडिकेट ए कांटेक्ट बिटवीन टू फेजेस. कांटेक्ट बिटवीन टू फेजेस, क्योंकि जिंक रॉड सॉलिड है और जिंक सल्फेट दैट इज द लिक्विड और एक्वस. सो जिंक इन कांटेक्ट विद, दैट इज सिंगल वर्टिकल लाइन, and Zn+2. Okay, so the anode
of the cell is represented by writing metal first and then metal ion, यानी पहले मेटल लिखेंगे, यानी फॉर एग्जांपल जिंक, और उसके बाद उसके आयन लिखेंगे जिसमें डीप किया है, फॉर एग्जांपल दैट इज जिंक सल्फेट है तो Zn+2 आयन लिखेंगे इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. नेक्स्ट, द कैथोड ऑफ द सेल the cathode of the cell is represented by writing the cation of the electrolyte first and then metal. So the cathode of the cell is represented by writing the cation. अब राइट हैंड साइड में क्या लिख रहे हैं आप, कैथोड इलेक्ट्रोड लिखे, तो वहां पर क्या लिखेंगे, पहले आयन लिखेंगे, जैसे कि कॉपर है, फर्ज कीजिए कॉपर आयन है Cu++ इन कॉन्टैक्ट विद कॉपर, और उसके बाद जो है इलेक्ट्रोड लिखेंगे. सो द कैथोड ऑफ द सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग द cation of the electrolyte first and then metal. Okay, so लेफ्ट हैंड साइड में एनोड लिखेंगे, पहले मेटल लिखेंगे और उसके आयन उसके बाद में लिखेंगे. राइट हैंड साइड में क्या लिखेंगे आप, दैट इज कैथोड लिखेंगे, और देन दैट इज उसके जो आयन है, आयन पहले लिखेंगे और मेटल बाद में लिखेंगे. Now next is the salt bridge which separate the two half cell is indicated by two parallel vertical line. जो the salt bridge है, salt bridge, what is salt bridge? Salt bridge यानी कि नमक का पुल जिसे हम कहते हैं, क्या फंक्शन है नमक के पुल का, कोई बता सकते हैं क्या? Yes, salt bridge, salt bridge यानी नमक का पुल जिसे हम उर्दू में कहते हैं, क्या फंक्शन है उसका? अब देखिए डायनियल सेल में हम दो सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, एक है जिंक सल्फेट और दूसरा है दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट. जब उसे सेल कनेक्ट करते हैं तो ये दो सॉल्यूशन मिल ना पाए, उसका काम क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज. इट अवॉइड द एक्सेसिव मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन. दिस इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, function of salt bridge, that is it avoid the excessive mixing, it avoid the excessive mixing of the two solution. So that is the function of salt bridge. Salt bridge का क्या function है, दो solution को मिलने नहीं देता, and it can be denoted by two double vertical line. C आपने देखा है अगर रिप्रेजेंटेशन में बाज़ मर्तबा दो कैथोड और एनोड के दरमियान डबल वर्टिकल लाइन लिखी जाती है, so it represent that is the salt bridge. It is the salt bridge. Next, sometime molar concentration or signs are also indicated on the liquid. Sometime molar concentration यानी aqueous है solution है तो AQ लिखेंगे, 1 मोलर है तो 1 m लिखेंगे, 2 मोलर है तो 2 m लिखेंगे, 0.1 मोलर है तो 0.1 m लिखेंगे. Okay, so this is the rule. Example हम जो है कल देखेंगे, that is how a cell is represented by using these rules. I will first repeat in short in the next period these rules and solve some, that is examples, that is how these are written. Okay, if you have any problem then write in the chat box, otherwise we will stop.